अस्सलाम-ओ-allaikum व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ pak301 के शॉर्ट नोट्स मिड टर्म की तैयारी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, राइट डाउन द पार्टीशन प्रोसेस फॉर बंगाल। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मुस्लिम गेन फ्रॉम द लखनऊ पैक्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी इन दी सबकॉन। नेक्स्ट है, व्हाट वर दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, डिस्कस इन डिटेल। राइट अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट इन 1940। व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट है, राइट अ नोट ऑन दी Commonwealth Award 1932. What were the main steps that were adopted towards the partition of Indian subcontinent? Next है, write a detailed note on the impact of Khalifa movement on Indian politics. Next है, do you think it was failure of democracy which led to imposition of martial law in 1958? Give your opinion. Next, write a short note on all the given topics. Dissolution of the first Constituent Assembly. Next, 1973 Constitution 5. General Mirza Aslam Beg. Importance of cotton export. Next question है, what were the salient feature of the Minto Marley reforms? Next है, right answer exceed more than 5 line each, should not exceed 5 line से कम हो। सर सैयद अहमद खान पे लिखना है, सरदार अब्दुल रब निश्तर, द 14 पॉइंट्स ऑफ MA जिना। सर सिकंदर हयात, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नेक्स्ट है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द न्यूली स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन 1947। नेक्स्ट है, ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट है, नोट लिखना है, साइंटिफिक सोसाइटी, इलाहाबाद एड्रेस ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल, द लाहौर रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, रिसाला असबाबे बगावत हिंद, गवर्नर जनरल, होम रूल लीग, नवाब सलीमुल्लाह खान, सर आमिर अली। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कैबिनेट मिशन प्लान एंड रिएक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस गांधी जिना टॉक्स सितंबर 1944। Next, highlight the second round table conference. Briefly tell the direct action day, August 16, 1946. Next, explain the cancellation of the partition of Bengal. Next, highlight Iqbal's vision of a separate Muslim state in the subcontinent. Briefly tell about the relations between Pakistan and Egypt. Write a very brief note on land reforms in Pakistan. What was the total strength of the National Assembly under 1956 Constitution? Draw attention of Junarga issue. Briefly tell about the issue of Islamic or secular status of Pakistan as a state.
Write down some line about the educational career of Allama Iqbal. Write a note on the geographical location of Pakistan. What do you know about river canal system in Pakistan? Write a note on the industrialization in Pakistan during Bhutto and Zia's regimes. Outline the criticism raised against the first report of basic principle committee. Next, what is the ideology of Pakistan? Next, the report was severely criticized throughout the country. इसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट है, ये वही रिपीट हो चुका है. डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन पाकिस्तान? व्हाट इज कोहे मालिक सिया? In recent geopolitical scenario, what role Pakistan's foreign policy should perform? Define agriculture and its role in any country prosperity. Write note on Islamic Research Institute under the 1962 Constitution. Write a short note on Pakistan's population and its features. What were the Islamic provisions introduced in the Constitution of 1962? Elucidate Pakistan's relations with the world in detail. Comment on the importance of education and why Pakistan's position is low down in literacy. नेक्स्ट है, मेक क्लियर इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज़. हु वाज जस्टिस शहाबुद्दीन? वेरी शॉर्टली डिस्क्राइब पाकिस्तान लिटरेसी रेट. हाउ डू यू सी पाकिस्तान सराउंडिंग्स जियोग्राफिकली? ड्रॉ अटेंशन टू क्रिटिसिज्म ऑन द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट 1952. Very shortly describe distance education in Pakistan. What are the main problems that Pakistan agriculture sector is facing? Describe the background of Constitution of 1962. What were the main constitutional issues which Pakistan had to face at the beginning? Write down a comprehensive note on Pakistan's natural resources. Very shortly highlight Pakistan's foreign policy as an Islamic state. Give detail about 1977 election and agitation. Write a very brief note on the second Constitution Assembly. What is the situation of resources or budget allocation in education sector of Pakistan? How do you explain diversity in the nature of territory of Pakistan? Do you think that the policy measure adopted by Ayub Khan become the reason of his downfall? Draw attention to the characteristics or features of Constitution of 1973. Tell very shortly about the modern technology education. What was the issue of separate or joint electorate in the beginning year of Pakistan? Who was Khwaja Nizamuddin? Highlight the Shahabuddin Commission set up by Ayub Khan in 1960. बस आज का लेक्चर हमारा यही था. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.